नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल व्हीलर कंप्यूटर्स में। आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि सर्कल का एरिया कैसे निकालना है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। वी विल मेक वन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। फर्स्ट अप वी विल स्टार्ट पाइथन। यू कैन सी द पाइथन आइडल। Click on file menu, then click on new file. New file gets opened. First I will type the hash sign. Anything after hash sign is regarded as comment, or anything which follows hash sign is regarded as comment, and it is ignored by the Python interpreter. So I will write the title of the program. Program to find the area of circle. We know that the formula which is used is area is equal to pi r square, and the value of pi is 22/7 or 3.14, and we have to supply the value for radius. So first I will declare a variable radius, then equal to sign, then we will start typecasting float. We will use input keyword input, enter the radius of the circle, then I will declare another variable, that is area. Area is equal to 22, or we can say write 3.14 into radius multiplied by radius print area of circle is now we will save this file as file, save as, area.py. Make sure you supply the extension as .py, otherwise it will not be saved as Python file. Click on save button. Now let us run the program by pressing F5 function key. Invalid syntax. Okay. Press F5. Okay. Enter the radius of circle. Let us say we enter 4.5. Area of circle is 63.585. Now let us try to understand the program. First line is beginning with hash sign. So hash sign marks the beginning of a comment. So anything which follows the hash sign will be regarded as comment, and it will be ignored by the Python interpreter. Now in the second line I have declared a variable, and its name is radius. Then we have used float data type typecasting. We are converting string into float, basically because when you use the input function, so whatever value you enter will be treated as string. जब आपने एक बार input function यूज कर लिया है तो उसमें उसके बाद क्या होगा कि prompt आएगा आपके मॉनिटर की स्क्रीन पे। आप जो वैल्यू एंटर करोगे, न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करोगे, तो उसको जो है एज स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एक डाटा टाइप से दूसरा डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमने टाइप कास्टिंग कर दी है। तो यहाँ मैंने फ्लोट डेटा टाइप ले लिया है। तो अब जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। थर्ड लाइन पे मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया एरिया, जिसमें हम सर्कल का एरिया स्टोर करेंगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे को पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो होती है दैट इज 3.14,
और रेडियस का स्क्वायर, तो 3.14 इंटू रेडियस, देन प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास के बीच में हमने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज कर दिए, तो जो चीज इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आ रही है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी मॉनिटर की स्क्रीन पे, कॉमा डाल के फिर एरिया वेरिएबल का नाम लिख दिया मैंने, आई रिटन द नेम ऑफ एरिया वेरिएबल. नाउ व्हेन वी रन द प्रोग्राम, it will prompt a message or it will display a message for the user to type the area of the radius, or not area, radius of the circle, that is I have entered 4.5 and it will calculate the area of the circle 63.585. so this is all about today's program. I hope you liked my video. I do request you to subscribe my channel and hit the like button, and please give the comments what type of further programs you want, so I would be glad to help you. Thanks.